and turn. Otherwise, there is no chance. A lot of our local people who've bought quality mares, उनको फर्क साफ ज़ाहिर है. साफ है. There and it isn't that everybody has 50 brilliant mares. क्वालिटी उनमें भी है. Some have good mares, कुछ एवरेज हैं, कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है. तो अब बात यही है कि सर एट द एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी सब्सटेंस. मेयर्स हैव टू कम विद सब्सटेंस व्हिच विल कॉस्ट. आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जितने हॉर्स पोटेंशियल एवरी पैट्रोन हैज, हाउ डू यू ग्रेड देम? Sir, it's a mixture of quality and quantity. You see, some people have quality horses, but they don't have the quantity. Some patrons have quantity, but they lack quality. It's और जब season में अभी, for example, BN is bringing in so apparently 33 mares. So when we see them, तो we'll know कि कितनी अच्छी quality है, क्या है, and you know how it's going to pan out. Everybody else here, we've seen most of their horses, so it isn't कि everybody has सारी equal distribution तो घोड़ों की नहीं है ना. किसी के अच्छी हैं, किसी की एवरेज है, किसी की मतलब everybody has a number of quality mares, number of average mares, number of. ये बताएं कि what will end of the day will make difference? Would it be a horse or would it be the players, those who are playing it? You know, the potential of the patron is clear, and all teams has one patron, and the potential is identical. Sir, इसमें ना because of our extended season this year, I think one of the biggest differences that one of the major factors that is going to play a big difference in the performance of team is going to be horse management. I'm thinking we have 6 weeks of 14 goals, which is very intense for all horses. तो उन 6 हफ्तों में जो घोड़े मैनेज अपने हॉर्स मैनेजमेंट अपनी बेहतर कर लेगा, तो आई थिंक दैट विल बी डिफरेंस, मेजर डिफरेंस. प्लस 8 गोल, पहले 2 8 गोल हैं, फिर देन यू गॉट अबाउट 6 वीक्स ऑफ 14 गोल्स, सो दैट्स अबाउट 8 वीक्स. अब 8 वीक्स कंटिन्यूस रनिंग है, उससे पहले देयर इज अ गैप ऑफ अबाउट 4 वीक्स ऑफ रेस्ट. Okay, my last question is that how do you see the potential of our organic horses, like few of the army teams, those who are just playing the local bred horses at the Mona and Sarkodha? What is their potential? How do you see them coming up into the high games? So we have to understand, so the basic breeding जो उसकी है घोड़े की, सर, it is mule based. It isn't based for पोलो के लिए तो breeding होती नहीं आर्मी में. So some of the horses that we have are quality horses, but they're very everybody, for example, there are 10 players, 2 प्लेयरों के पास 3 घोड़े अच्छे हैं, 2 के पास 2 घोड़े अच्छे हैं, किसी के पास एक घोड़ा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है जो क्वालिटी है घोड़ों की. So training also matters. Training is something that is not really very capable right now in the army, and our local bred horses are ठीक है सर, they're good, but they will need, I think, on the other hand, सर, आप देखें कच्चे के घोड़े quality has come up, ठीक है. So I think long run में when you slowly keep improving, long run में they will come to a certain standard. But with the Argentinian mares coming in, और ये जब ब्लड लाइन मिक्स हो जाएगी, जब सारी ब्रीडिंग आगे शुरू हो जाएगी, तो आई थिंक इट विल इम्प्रूव. इवेंचुअली लोकल बन जाएगी ना जो अर्जेंटीना. आई थिंक इस दफ़ा टीम्स को हॉर्स मैनेजमेंट बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी, कि बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ 8 गोल एंड देन I think it's 11 weeks of 8 goals and then 6 weeks of 14 goals. One has to be selective. So one has to be very careful. Exactly, sir. One of the major, like I said before, major difference विनिंग टीम में वो होगा जिसके घोड़े की मैनेजमेंट, स्टेबल मैनेजमेंट सबसे बेस्ट हो. Well said. एंड the big teams that we have here, उनकी हॉर्स मैनेजमेंट इज एक्सेप्शनल ऑलरेडी, so they're going to have to step it up again. Okay, these were the candid views of Kararuma Minhas and Brigadier Tariq Niazi.